All right, I have started, recording the session so that this recorded session that would be available for you to visit it over and over again as you need. All right, we were discussing the learning outcome one on definition and the marketing concept. We have very clearly discussed all these things. What was the definition and what was the marketing concept? And then moving bit ahead, definition of marketing and the nature of marketing. We have talked about this, the development of the marketing concept, including current and future trends, how the external environment influences and impacts on marketing activity. In fact, this was the yesterday's lecture. So we have discussed, these things. The role of marketing, the structure and operations of the marketing department. We were trying to discuss this yesterday, but in today's lecture, I'll try to recapitulate all these concepts and moving towards the next contents, the structure and operation of marketing department, an overview of the marketing processes that include analysis, strategic planning, and the marketing mix. So we shall be just touching these things today, and the different role of the marketing within both B2B, B2C, and B2B context. So this is the thing we are going to discuss today. So let me open up the book. Right, this is the book, and this is where we were yesterday. So, right, marketing. We were discussing this yesterday. The internal organizational environment. We were discussing this, and in fact, this is all about. Let me go a bit beyond this. Yeah, these were the orientations, and corporate social responsibility and ethical marketing. This was the latest orientation because companies, they are working in a society, right? We're talking about the marketing orientations. We have discussed like product, production, sales, marketing, and the latest are corporate social responsibility. This is known as CSR, right? So let me highlight this. And societal and ethical marketing. So primarily the prime concern of the business is to make money. We understand this is right. But in fact, different companies, they are operating in certain societies. So they have certain societal responsibilities on them because they are operating in a society. So they cannot destroy the society. They cannot destroy, the environment. They cannot destroy the earth. They cannot destroy the water. So same is the case, like we are living in Faisalabad, and Faisalabad is known as city of textiles, and the textile firms and textile concerns, they are located, outside the Faisalabad city, like near the Khurdanwala and on the GT road, stuff like that, because they are out of the Faisalabad boundary. In fact, there is no such population that resides near those, because where the companies they operate, they have to dispose their waste and everything into the earth and environment and and the pollution and stuff like that. So companies, they are very vigilant today because they have to comply with different ISO certifications and different environmental concerns, because Pakistan is going green. I mean, PTA's government is focuses to plant maximum trees and making the environment green and clean and oxygen filled as the entire world that is going through, the pandemic, COVID pandemic, and we need oxygen. So if you people are making some efforts to make your environment very clean, so that would be helpful for your wildlife, for your fisheries, for human beings, and everything. So these are the concepts, because the latest concerns of the companies, they are operating in the society, so they have to take care for their social responsibilities, their ethical responsibilities. That was one of the latest marketing concerns. Sustainable marketing, of course, the companies, they have to stay in the business for the long term, so their every marketing effort, they must be sustainable, so that company could go with that vision for the longer time. So that was the thing. Then we were discussing the external environment. We have discussed this.
Then we were discussing the internal environment, right? And yes, this is the topic we are going to marketing as an integrative business from. This is how marketing is coordinating with its internal departments and the external environment. Or another name of this topic is role of marketing. How this is how marketing plays its roles with. So let me just explain this diagram or this figure only, figure 1.3. This is marketing, right? This is your company's internal environment within the company. So production, research and development, human resource management, this is finance, and this is marketing. Marketing is always in the center. As you see this, I mean, the entire diagram, that marketing is its central point, right? And all these are the functions of your organization, of your company. So that's why this is organizational context, internal environment. So when we talk about the external environment, so again, we think that marketing plays a central role in coordinating with the internal departments as well as with the external departments. Like customers are outside your company, intermediaries are outside your company, competition or the industry that is again outside of your company, supplier is outside of your company, and marketing environment is always outside of your company. So that's how marketing plays its important role to coordinate with external and internal environments. Marketing as an interface, how does this coordinate with both kind of environments? So customers current product needs, future product needs, price, information needs, product availability. So this is job of marketing to assess the customer's current needs. What does your customer want at the moment? This is the job of marketing to assess, to identify those needs. Future product needs, this is again job of the marketing department to assess the future needs of your customer. Isha is going to join us. Let me check where is here. Wait, thank you. So price, setting setting an appropriate price for your product. That is again job of your marketing department, right? Information needs. You are looking for certain information about your job. So whenever you buy anything, you always find out the information about the product or service you are interested in. For example, you are going to buy a mobile phone or handset. You're going to buy a laptop. You're going to buy an automobile. You're going to buy a pair of joggers for you. So you always go to the website of the company. You always try to check the designs and prints which are available. You always try to browse the information whichever that's available. So that is again a job of marketing department that tells the company's different people who are managing the website or the Facebook pages that this kind of information they must be available for the customers. That they should be eye-catching, they should be eye-pleasing, they should be attention-taking, stuff like that. And product availability that comes from placement, and placement is one of the P's of marketing mix, right? So that is again one of the pillars of marketing mix. So that's how the entire job that is going to be done by the marketing department in case of customers. Is this clear? Usama, baat samajh mein aa rahi hai na? Yes, sir. Ari. Chale. Intermediaries. We have discussed yesterday. Intermediaries are the people which are between the end user and the company. You know, all the entities, all the businesses, all the people that are working in between the company and the end user, all of them, they are known as intermediaries. For example, there is distributor. For example, there is stockist. For example, there is wholesaler. For example, there is retailer. So all these are the intermediaries, the marketing intermediary. So what quantity, what demand, what price, what sales support, what logistics, what timings, all these people need to make sure the quantity, the demand, the price, the support. Logistic is transportation. Logistic is another name of transportation, right? And timing. So all these people, all intermediaries, they would be coordinating with your marketing department, people from sale and marketing, to make sure all these things on time.
Competition, current products. What are the current products that are available in the market? Again, what are the future products that would be available in the market? For example, Samsung is working on this kind of handset. iPhone is working on this kind of handset. And their third competing brand, Huawei, for example, that's working on this kind of handset. So all these three companies, they must know that future mobile phone, they would be like this. Like the companies you might have seen on Facebook, the concept cars and concept airplanes. So that is the future products. This is how the companies, they start working on the future products right now, because they set their goals. And right, we are presently now in 2021, and this is how the mobile phone is going to be redesigned in 2030 or 2025. So these are the future products, right? So the customer behavior, that is going to be changed, your needs that are going to be changed drastically at a very fast pace, and you have to redesign your products accordingly. So future products की हम बात करते हैं. The target markets, of course, target markets are the customers, right? Your company is going, for example, we were discussing about the Proton is a Malaysian automobile brand, and Proton has recently made an entry into the Pakistani market, right? So Pakistan, Proton, that has taken Pakistan as its target market, and that is coming with the entry level sedan car that is going to give a tough competition to the compact cars, and sedan car like City and Yaris, like Picanto and like Cultus and stuff like that. So that's how you check. So again, this is the job of marketing people, the marketing manager, the director of marketing that has studied, the Pakistani market and the consumer behavior of the Pakistani automobile users, and that is decided that Proton Saga with 1.3 engine, that must be targeting the Pakistani market, and there is nice room and market share available for such entry-level sedan car, because there is Picanto, which is quite expensive, there is Cultus, which is again expensive, and there is, for example, City and Yaris, they are expensive. So this is the nicely priced car, and it would find a better market share. So again, this is the job of marketing people. Communication strategy. Communication is all about promotion. Communication is all about advertising. Communication is all about integrated marketing communication. Communication is all about digital marketing. So now you are seeing the Protons ad in newspapers, you are seeing the Proton ads on the YouTube reviews, and you are seeing the Proton ads, the billboards in your city, and different dealership, and the people, they are contacting the dealership, and dealership is reaching out with the Proton offers. So that's how you need to communicate all these the functions and features of your product and availability of the product, of the service to the people, and distribution, of course, and suppliers, of course. So the competition. So when you stay closer to the industry, it means your marketing department is more efficient, right? So that has a good know-how or good understanding with the competition, with the industry overall. So let me clear the drawings here. Right. So supplier specifications, quality, quantity, logistics, and price. That's again one of the same thing. This again one of the same thing. You have to deal with your suppliers. What kind of product you need, what kind of raw material you need, what would be the specification exactly you need, quality of the raw material, quantity, logistics, and price. All these things, they would be coordinated with the suppliers, your marketing department that would initially coordinate with the suppliers. Marketing environment, we were discussing yesterday, there is socio-cultural change, there is technological change, there is economic, there is political. So that is how marketing plays its functions, centrally coordinated with both internal and external environments. Right, moving ahead. Marketing management responsibilities. There is always a marketing manager, right? So what are the prime responsibilities of marketing manager, or the marketing department, or the marketing management responsibilities? Number one is identifying customer needs. We have clearly discussed that this is the job of marketing people to identify the customer needs. So no more discussion regarding this topic. Satisfying customer needs. Of course, once we have identified the needs, we have to satisfy the needs. We have to develop the products and services which
has a good strategic fit with the needs, and once the needs of customers are satisfied, they would be happy users, happy buyers of our company or the products, and they would be satisfied. And this is how we can go a long way together. What exactly the product needed? Marketing mix. In fact, marketing people are the marketing manager or the marketing management team, or the responsibility of marketing management is uh, rightly design a marketing mix for the company, for the product. So most of the people about the marketing mix, this is a very traditional concept. Another name that is known as 4 Ps, because these are the 4 Ps. I mean, these are the four pillars or concepts, and all of them, they start with P. That's what they are known as Ps, right? Another name is marketing mix. So the first P is price. Rather, the first P is product. This is product, this is price, this is place, this is promotion. So it moves like this, right? This is how it completes its circle. Wait, wait, wait. Let me annotate you. Where is the annotation? Oh, yes. So this is number one. This is number two. This is number three, and this is number four. So, product, discussing about the first P of this marketing mix. This is very easier, very simple concept. Most of you people already know this. Product is new product development, product management, product feature and benefits, branding, packing, after sale services. So इसमें सारी वो चीज़ें जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं वो हमारा फर्स्ट पी उसको कवर कर लेता है. For example, new product development, we have to develop a new product. Of course, this is one of the jobs, important jobs of your company, right? आवाज ठीक आ रही है आपको? जी सर. Good. तो शाम हम कितने लोग हैं? अब हम चली तो नहीं गई? No. So we नहीं are. सर, हम दो हैं, Okay. मैं और ईशा है सर. Right, that's nice. So जितनी भी प्रोडक्ट रिलेटेड चीज़ें होंगी, नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, ऑफ कोर्स करनी है, ये हमारे मार्केटिंग मिक्स का जो पहला पी है, प्रोडक्ट, ये उसका काम है. प्रोडक्ट को मैनेज करना है. एग्जिस्टिंग बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में, किन्हीं को मार पड़ रही है, कुछ पिट रही हैं, कुछ अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रही हैं, भाई. किसी की प्राइस के साथ इश्यूज है, किसी की प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, जो हम अपनी बात कर रहे हैं उसमें कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं. सो वी हैव टू मैनेज द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स. समटाइम्स क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट अच्छा डिज़ाइन करते हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि यार ये मेरा प्रोडक्ट था, इसके ये बोले फीचर्स थे, मैं वो फीचर्स ही लोगों को नहीं बता सका, राइट? दैट वाज अंडर पोजीशन, the product was under position because I could not launch a right marketing campaign for the product, and the features and the benefits of the product, they couldn't be told to the customers. इसलिए उसको बाय नहीं कर सके, हमने उसकी अच्छी मार्केटिंग नहीं की. ब्रांडिंग, ऑफ कोर्स देयर इज प्रोडक्ट, देयर इज ब्रांडिंग. ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स की ही होती है. पैकेजिंग भी प्रोडक्ट्स की ही होती है, राइट? और आफ्टर सेल सर्विसेज, वंस द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, right? And now we are facing the different claims, different problems which are faced by the customers, after the sale. So ये सारी की सारी चीजें जो यहाँ आती हैं, ये आपकी product related है, and this is the first and foremost P of your marketing mix. So moving to the second, there's the price. अब cost क्या है? जितना हमारा उस पर खर्चा आता था वो, और उसके अलावा जितनी हमारी उस पर प्रॉफिट होगी और किस तरीके से हम उसको प्राइस करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट. अब प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है, दैट इज कॉस्ट. अगर चीज़ की कॉस्ट कम आई है तो ऑफ कोर्स द प्राइस दे वुड बी रीजनेबल. इफ द कॉस्ट इज हाई, ऑफ कोर्स द प्राइस दे वुड बी हाई. तो ये चीज़ प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ कोर्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑलवेज अ प्राइस. तो ये दो चीज़ें प्राइस को देखेंगी.
वैल्यू फॉर मनी, अगेन ये आप फैसला करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दैट इज वैल्यू फॉर मनी और नॉट। वैल्यू फॉर मनी इज अ प्राइस वेयर कस्टमर दैट इज हैप्पी विद द प्राइस। यानी आप फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, हम देखते हैं जी प्रोटॉन मिल रहा है आपको जो उसका प्रीमियम वर्जन है दैट इज 22,25,000 रुपए की शायद वो गाड़ी है। तो हम ये देखते हैं कि यार 22,25,000 में आपको एंट्री लेवल सेडान मिल रहा है, यार ये तो बहुत अच्छी प्राइस है। क्यों इतने पैसों में आपकी कल्टस है वो 19-20 लाख की वो आ रही है, पिकेंटो हो 18-19-20 लाख की शायद वो आ रही है। सिटी की हम बात करते हैं तो वो चली जाती है 25-26 पे, हम यारस की बात करते हैं तो वो उससे भी चली जाती है 27-28 पे। तो साइज़ भी ऑलमोस्ट वही है, फीचर्स भी ऑलमोस्ट वही हैं, राइट। और सेडान की सेडान है और हैचबैक नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है, तो ये बड़ी सही प्राइस की गई है। तो बड़ा अच्छा ये कंपटीशन दे जाएगी इन इन गाड़ियों को जो हैचबैक हैं या जो कॉम्पैक्ट हैं। तो ये सेडान भी है और पैसे इसके हैचबैक वाले हैं। तो इट मीन्स प्रोटॉन दैट इज़ डिसाइडेड to price this car on the strategy that's known as value for money, because you are paying this much and you're getting this much. So customers, they would be happy. उसका कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस जब बैठ के कस्टमर करेगा तो वो खुश होगा कि मैंने जितने पैसे लगाए उसके अगेंस्ट मुझे उतनी वैल्यू मिल गई। कंपैटिटिवनेस पे यही होती है कि मेरा जो है मेरा जो प्रोडक्ट है उसका जो कंपैटिटर है वो वाला प्रोडक्ट कितने में ऑफर कर रहे हैं और मैं वो प्रोडक्ट कितना ऑफर में कर रहा हूँ। सो माय प्राइसेस, to what extent my prices are competitive. For example, Coke or Pepsi, both are very close competitors and their prices are always similar. They follow the same pricing strategy, right? वो उतने में वो उतने में, because they know the entire market that is captured by either Coke and Pepsi. I'm talking about the entire beverage market. तो competitiveness होनी चाहिए। आप ये ना हो कि यार market में the one variant or the one product from a competitor that is available in very low price, and you offering the same product and service to the market at a very high price. So people won't buying your product because they would compare after all. And the price difference, they would simply, I mean, they would simply destroy your client age कि यार ये चीज़ें ये ठीक नहीं है। So your pricing that should be comparative. मार्केट बेस्ड प्राइसिंग हम उसको कहते हैं कि इस मार्केट में ये चीज़ें इतनी, इस्लामाबाद की एक अपनी फॉर एग्जांपल मार्केट है, कराची की एक अपनी मार्केट है, फैसलाबाद की एक अपनी मार्केट है। तो लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट वाइज प्राइस किया होता है टू मेंटेन अ सर्टेन कंपैरेटिवनेस। इंसेंटिव ये होते हैं कि आप कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग पे। अभी आप देखें 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, buy one get one free, buy two get one free. So these kind of the price related offers, price related options that are given to the customers. Third one is एक्सक्यूज मी placement। सर। जी 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 साहब। सर इस सेकंड वाले के अंदर हम इकोनॉमीज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जी सर वो डाल सकते हैं ना? हाँ जी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से ऑफ कोर्स आपका कॉस्ट आपके कंट्रोल में आएगा। सर जी जी। सर ये ये कॉस्ट में आएगा कि सेकंड वाले में प्रॉफिट में आएगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल दोनों में आएगा ना, आपकी कॉस्ट कंट्रोल होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक सर, मीन के ये थर्ड और फोर्थ भी नहीं आएगा, ये फर्स्ट टू में आएगा। अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपका आपका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और रेवेन्यू यस सर। इंक्रीज भी हो सकता है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर आप अचीव कर लेते हैं। इनफैक्ट होता ये है कि हर कंपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव भी नहीं कर पाती ना, दैट्स नॉट दैट ठीक। इजी। हाँ जी, वो तो आपकी मास प्रोडक्शन चल रही है, मास प्रोडक्शन चल रही है, आपको कोई डिफरेंट वेरिएंट्स नहीं बनाना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो फिर आपने जी उसको सर। रख के हाँ जी शुरू कर दिया और आपने इतनी प्रोडक्शन, चाइना इज डूइंग व्हाट, ठीक है, चाइना को पता है कि यार मैंने एक चीज़ बनानी है तो मैंने पूरी दुनिया को भेजनी है। तो वो उसकी इतनी मैस प्रोडक्शन करता है, वो इतना अच्छा इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करता है कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट बड़ी कम हो जाती है। एंड दैट्स हाउ दैट इज डिस्ट्रॉइंग द इंटरनेशनल मार्केट्स। एंटी डंपिंग ड्यूटीज वो भर लेता है और वो प्रोडक्ट्स इतनी सस्ती बना के एक्सपोर्ट कर देता है कि अगले मुल्क की अपनी इंडस्ट्री तबाह होने लगती है। तो दिस हाउ चाइना इज डूइंग।
you're very right कि आपका जो economy, once you are achieving economies of scale, so your cost that would be controlled, your profitability that could be enhanced, and your price that would be reasonable, ultimately. Yeah, should we move towards the third P? यस सर। Thus placement. अब हम यहाँ आ गए, हम इसकी बात करते हैं placement की. Right, this is the placement. Placement is all about making your product available to your target market, to your customers, to your consumers. This is here access to target market. Of course, once your product that is available in the market, your target market, they would access the product. Channel structure means how would your product travel from production unit to the retail outlet and to the end user. आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन बनते किधर हैं पता नहीं आपको. ये जो आईफोन है ये कहीं चाइना में बनता है, डिज़ाइन पता नहीं कहीं अमेरिका में होता है. सैमसंग कोरियन ब्रांड है, कोरिया में कहीं बनता होगा, मिलता आपको कचहरी बाजार से. So you are getting, you're buying this product from Kachari Bazaar. So this is how products are nicely placed. कोका कोला उसकी इधर कहीं पंजाब बेवरेजेस का सेटअप लगा हुआ है, पता नहीं खरोड़ियाँ वाली वाली साइड पे, इधर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में लगा हुआ है उनकी कंपनी जहाँ उसकी सारी वो होती है, या इधर सुमंदरी रोड पे उनका सेटअप है. बट यू आर गेटिंग पेप्सी फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री. आप गांव में बैठे हैं, आप शहर में बैठे हैं, आप टाउन में बैठे हैं, आप गली में बैठे हैं, मोहल्ले नुक्कड़ हर जगह से यू आर गेटिंग पेप्सी एंड कोक बिकॉज दोज आर नाइसली placed. The placement means you are making your product and service accessible to your customers. Channel management ये है कि आपने चीज़ों को out of stock नहीं होने देना, right? आपने अब कोक और पेप्सी का इतना खूबसूरत चैनल नेटवर्क है, अगर आप देखें तो उन्होंने जो मार्केट है that has been distributed very nicely. आप खड़े होके कहें, for example you are going to open a small मैं उसको क्या कहूँ, a shop where you want to keep and sell Coke and Pepsi beverages. You're going to open a restaurant and you're asking for beverage stocks from Pepsi. तो आप कहते हैं कि जी मैंने मदीना टाउन में इस जगह पे एक छोटा सा खोखा ये रेस्टोरेंट ओपन किया है एंड आई वांट टू कैरी द पेप्सी प्रोडक्ट्स देयर, पेप्सी बेवरेजेस देयर. आप वहाँ खड़े होकर पेप्सी को कॉल करेंगे, उनको कहेंगे कि जी मुझे यहाँ फ्रीज़र चाहिए, मुझे यहाँ इतना स्टॉक चाहिए. तो आपको पेप्सी वाला कहेगा कि यार ये वाला जो एरिया है ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता. ठीक है, मैं आपको एक बंदे का नंबर देता हूँ जो इस एरिया को देखता है, आप उसको कॉल करें. तो यहाँ स्टॉक देना, भरना, ठीक रखना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समबडी एल्स एंड दिस माय कॉलीग. तो वो फिर आप उसको फ़ोन करेंगे और वो वहाँ आपको स्टॉक देगा. सो उन्होंने दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड every inch of the market because this is you and this is your job to look after this kind of area and this kind of market, and this is you would be responsible for making stock and for giving supplies to the customers in this area. So the market, geographically the market is divided amongst the different sales people and they are responsible for catering all these the points or the restaurants in that area. तो चैनल की मैनेजमेंट आपको अच्छी करनी पड़ती है. ये ना हो कि बंदे का स्टॉक खत्म हुआ है and is calling you over and over again and you're not picking up the phone and he is out of stock. No. If your channel management is not okay, of course you cannot pass on, you cannot push your product into the market. Retailer image, if you placement पे अंदर कि आपका प्रोडक्ट किस किस रिटेलर पे आपने रखा हुआ है. अब City Cash and Carry is a different retailer, that is a retail outlet. For example, Imtiaz, that is a different retailer, and there is SB Store, that is a different retailer. And coming down, छोटे retailers हैं जो पान शॉप हैं वो different retailer है, और उससे और नीचे आ जाएं तो वो छोटे छोटे किराना स्टोर और वो चीज़ें बनी हुई हैं, ये different retailers हैं. तो so this is your job कि आपका product किधर बिकना है, कहाँ बिकना है, किस retailer को देना है, किस retailer को नहीं देना. So all this comes under placement. And logistics mean again transportation with the help, you have seen many times, I mean the trucks and transportation of the Pepsi and Coke. So their vans and their stock that is going to the different points. वो जो गाड़ियाँ, हाँ जी, जो गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं कोक और पेप्सी की, that is logistics, because product is going to be physically available in the different retail outlets. There was a third P placement. The सर जी जी सर जी 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 जी. सर यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आ सकते हैं ना, ये जो सारा आपने ये डिस्कस चैनल किया है.
ये चैनल क्या है? ये जी, चैनल, उसने एक जनरल वर्ड यूज किया है ना, ये चैनल होलसेल चैनल भी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ये सब कुछ है। मतलब कि सर ये हम इन सब को अगर जी एक जी। साथ करेंगे तो इसका तो ये क्या बनेगा सर? किन सारी चीजों को एक साथ करेंगे? सर ये देखिए ना, आपने हम्म बताया ना कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है मीन के हम किस तरह करेंगे। आपने ये बात की है ना कि अगर फोन वहां पे बन रहा है, ठीक है, हम्म आपको हम्म यहाँ पे हम्म मिल रहा है, तो हम्म कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि फोन वहां से यहाँ पे आया है, पहले हम्म मार्केट में आया है, उस फिर हम्म सारा कुछ उस पर टैक्स वगैरह पे हुआ है, फिर हम्म। आपने लिया, ये किस तरीके से मैंने जाके लिया सर? ये प्लेसमेंट है। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, ये जो कंपनी है, जो सैमसंग है, सैमसंग एक कोरियन ब्रांड है। सैमसंग वहाँ मोबाइल फ़ोन बनाता है, राइट, और वहाँ से मोबाइल फ़ोन बना के वो पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट भेजता है, और उसका बायर और उसका यूज़र पूरी दुनिया में बैठा हुआ है। अब वो बन वहाँ रहा है, प्रोडक्ट उसकी उधर है, पहला पी उसका नॉर्थ कोरिया में। हम अब उस सैमसंग के मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं। सो प्रोडक्ट इज सैमसंग मोबाइल फ़ोन हैंडसेट, एंड दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी। तो उधर हो गया। अब उसने क्या करना है, प्राइस। अब आपको पता है कि यार ये वाला वेरिएंट जो है वो 60,000 का मिलता है, ये वाला वेरिएंट जो है वो 70,000 का मिलता है। अब वो 70,000 कैसे बना? कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी। सो कीपिंग ऑल these थिंग्स in mind, same Samsung decided to price this variant for 60,000 rupees, right? चलें, प्राइस वाला काम हो गया। अब उसने ये कहा कि यार मैंने इसका 60,000 रुपया कीमत रख ली, या मैंने इसकी $300-400 इसकी कीमत रख ली इंटरनेशनल मार्केट में। नाउ आई हैव टू मेक दिस प्रोडक्ट अवेलेबल, यू नो क्रॉस द ग्लोब, कि लोग इसको बाय कैसे करेंगे? अब हर बंदा तो वेबसाइट पे आके ऑर्डर नहीं देगा, हर बंदा तो कोरिया आके मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो मुझे इस प्रोडक्ट को भेजना भी तो है, अवेलेबल भी तो बनाना है। तो फिर वो अगला पी, जब उसकी मार्केटिंग मैनेजमेंट, जब उसका मार्केटिंग मैनेजर सैमसंग का बैठ के वहाँ डिसाइड करेगा, एंड दे वुड बी डिजाइनिंग इट्स मार्केटिंग मिक्स, तो उसकी प्लेसमेंट में ये बताया जाएगा कि राइट, में मुझे कांटेक्ट करना है कि जी पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इधर 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 जिस जिस रीजन्स में जाना है, कि मुझे अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कैसे करना है। तो वो फिर प्लेसमेंट में जब आएगा तो उसको पता चलेगा, अच्छा ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन का काम कर रहे हैं, इतनों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है, इतनों को मैंने ये रेट, इतने यूनिट्स, इतने वेरिएंट्स इस तरीके से देने हैं। जो साओ जैसे जैसे सिलेक्टो है, इसके अलावा और जो बड़े रिनाउंड आपके हैं रिटेलर्स, तो वो फिर प्रोडक्ट उनको भेजेगा। ऑफ कोर्स अब वहाँ से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना, उसकी सारी की सारी आपके जो है लाइक चीज़ों की एडजस्टमेंट, सेटलमेंट, प्राइसिंग, रिस्क को कवर करना, इन सारी चीज़ों को आप देख रहे होंगे पीछे। जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है सैमसंग का, जो बैठा हुआ कोरिया में, मुमकिन है वो दुबई में बैठा हो, मुमकिन है वो कहीं और बैठा हो। सो दैट इज़ हाउ द प्रोडक्ट ट्रेवल्स। ये तो फिर भी बड़ा सेटअप है जो सैमसंग का। लोग ये सारे का सारा यूज्ड आईफोन नहीं मंगवाते, आपने देखा होगा, लोग दुबई से मंगवा रहे हैं, लोग कोरिया से मंगवा रहे जी हैं, लोग सर। ताइवान से मंगवा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है? सो they have they have found out, the different channels, कि यार एक बंदा है जो बल्क में उठाता है फ़ोन, वहाँ से ताइवान, ताइवान से फ़ोन आते हैं फॉर एग्जांपल दुबई, दुबई से किसी तरीके से या तो स्मगल होके आएगा, या किसी तरीके से भी आएगा और वो पाकिस्तान में पहुंचेगा, और पाकिस्तान में डिफरेंट लोग होल सेलिंग का काम कर रहे होंगे, वहाँ से उठा के कुछ लोग अपने रिटेल आउट्स पे लेके जाएंगे, और इस तरीके से वो चलेंगे। सो दैट इज़ हाउ प्रोडक्ट इज़ ट्रेवलिंग from the company, from the manufacturing unit, uh, up to the retailers and end user. तो ये सारे का सारा प्लेसमेंट में ही आता है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना ली, आपने प्राइस भी बड़ी अच्छी कर ली, लेकिन आपसे प्लेसमेंट ठीक नहीं हो रही, उसका मतलब है यू आर अनएबल टू सेल योर प्रोडक्ट, because product is no longer accessible to the customers. Customer is finding product not easily. Customers, they have to wait for the product. They have to visit the retailers uh, again, and the product is not physically available there. Customers, they have to wait for the product. इसका मतलब ये हुआ कि वो इरिटेट होगा कस्टमर, और वो सोचेगा यार छोड़े, इस चीज़ को नहीं मिलता। लाइक you visit for soft drink, you buy Coke is not available, you ask the retailer, give me a Pepsi is not available, you ask the retailer for another beverage. So अपने प्रोडक्ट को वहाँ अवेलेबल रखना, करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दिस इज हाउ यू डिज़ाइन योर प्लेसमेंट चैनल्स। तो ये सारी की सारी चीज़ के अंदर आ जाती है। लोगों के बड़े अरेंजमेंट्स होते हैं पीछे, कुछ फेयर, कुछ अनफेयर, कुछ लीगल, कुछ इलीगल। सो दे आर importing the products and making them available, right? Promotion.
Promotion is the last one. This is traditional marketing mix that is consisting of 4 P's. But when we talk about the new marketing mix, that is consisting of 5, 6, and 7 P's. So we'll discuss that later. Promotion is developing the communication mixes. Now we are talking about the communication mix. Communication mix has been using the different communication strategies, communication devices, communication channels to promote your product. Fine, अब उसकी डिटेल में हम बात कर लेंगे. Advertising management. Advertising is all we know very well. Advertising is everywhere. Advertising is on billboard. Advertising is on newspapers. Advertising is on YouTube. Advertising is mobile phone. Advertising on the television. So everywhere advertising is. Sales promotion management. Of course, we have to promote your sales. Promotion. We have to promote the product. We have to make a product popular. We have to make a product known to the customers. So if you don't know, you cannot buy. And public relations management, that is again promotion, and the direct marketing, that is again part of the promotion. That is how this is, the job of marketing people. This is the job of marketing manager. This is the job of core marketing team of any company, to deciding and setting up a right marketing mix, and that's how you can make your product successful in the company. So this is 9:57, right? Let me check here this topic. Let me clear the drawings. Then this is how the price is going to be explained. You people can study this at your own. This is about the placement. This is about the promotion. So, it's chapter number 9. Of course, all these things, they would be discussed in detail in some later chapters. There's people. That was not included. I shall discuss it in detail. People. There was the processes. We were talking about the additional piece. There was the physical evidence. Those were the 4 P's. This is the 5th one. Processes is the 6th one, and people is the 7th one. So the modern marketing mix is consisting of 7 P's. But again, I shall discuss, the marketing mix with the 7 P's in detail, taking some other local example. Strategic vision, that is a planning topic. I shall discuss that. Consumer goods, these are the goods. Again, let's keep this topic for tomorrow's class. And B2B and B2C and non-profit marketing and small business marketing, international marketing, chapter summary. That's how we have almost finished this chapter. We shall finish this chapter tomorrow, and our learning outcome 1, they would be completed. So I shall try to keep a small quiz after every learning outcome, and end of the day, Usama and everybody, please listen. We shall try to design a marketing plan for a product or for our own institution, by the end of this course. So we shall try to develop the skills, how marketing manager thinks and how marketing manager design the marketing plan, right? Sure, sir. वो फिर आपको हेल्प भी करेगा कल कल जब आपने अपने बिजनेस स्टार्ट करने हैं, and you would be designing your marketing mix and you would be designing your marketing plan. That would be easy for you, that would be helping for you. राइट जी, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई कंसर्न है तो उस पर हम बात कर सकते हैं. That's open. नो सर. कितने लोग हैं मैं देख लूं, फिर मैंने आपकी अटेंडेंस भी मार्क करनी है. Usama is with us and Isha is with us. That's it. That's me and this is Warda. All right. Both of you, who else is? Usama, Isha? H&D Faisalabad co-host. Somebody is co-host. Who is my co-host? Oh, they left the class. So, right, Usama and Isha. Isha, आपने कोई बात नहीं किया आज. Isha, आप हमारे साथ हैं? जी सर. ईशा, आपको समझ आया जो हमने पढ़ा? मार्केटिंग मिक्स पे हमने बात की, मार्केटिंग मैनेजमेंट के जॉब से बात की सर. We wish that we could have the physical classes on campus, so face-to-face interaction that enhances learning. Anyway, thank you very much. Have a nice time. God bless you all. Allah Hafiz.